तो फिर आज बेटा स्टार्ट करते हैं वाटरफॉल मॉडल के जो वेरियस फेजेस हैं तो उनका डिस्कशन। ठीक है ना। द फेजेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल्स आर, सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। अजय बेटा अपनी वॉइस म्यूट कर लिया। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, उसके बाद दूसरा है डिजाइन फेज, ठीक है ना। तीसरा है हमारा इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, जिसको इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग पार्ट इम्प्लीमेंट करना, और यूनिट टेस्टिंग मतलब हमारा टेस्टिंग पार्ट अभी नहीं आता है। ये यूनिट टेस्टिंग मतलब जितने मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग, जो थोड़ा सा काम किया उसको टेस्ट किया, फिर थोड़ा सा जो काम किया उसको टेस्ट किया। उसका नेक्स्ट आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग हमारा मेन सिस्टम का टेस्टिंग है, जिसको हम लोग ने SDLC में लाइफ साइकिल मॉडल्स में जो है टेस्टिंग का फेज पढ़ा था। उसके बाद लास्ट में आता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस लास्ट में। ये इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जो हम लाइव इम्प्लीमेंटेशन फिर करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला लिखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। सबसे पहला लिखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। लिखिए द एम ऑफ दिस फेज, द एम ऑफ दिस फेज is to understand the exact requirement of the customer both customer and the software development, both customer and the software developer, both customer and the software developer work together so as to document all the functions and interfacing requirements of the software. So as to document all the functions and interfacing requirement of the software. It describes what the system to be produced. It describes what the system to be produced. एक मिनट होल्ड करिए बेटा। देखिए फिर इन दिस फेज a document called and in this phase a document called software requirement specification document is created. A document called software requirement specification document is created, which contain a detailed description of what the system will do. नेक्स्ट फेज है डिजाइन फेज।
Next phase है design phase. Because this phase aims to perform this phase aims to perform this phase aims to perform the coding, sorry, not coding, performs together to gather to gather the software architecture software architecture with suitable forms with suitable forms all the work is documented all the work is documented all the work is documented and a software design is to be and a software design is to be implemented according to that document according to that document. These documents act as an input. These documents act as an input for the next phase that is for coding. That is for coding. Now third phase is implementation and unit testing. Third phase is implementation and unit testing. At this stage, at this stage, at this stage, the coding is implemented. Coding is implemented on the design which is already present.
which is already present. This code is thoroughly examined and modified at this stage करके लिख लिए at this state the code is thoroughly examined and modified कॉमा करके लिखिए small modules are tested small modules are tested मैंने बताया ना यूनिट टेस्टिंग होती है यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स जो जो थोड़ी छोटी कोडिंग्स की जाती हैं उन्हीं को टेस्ट करते चलता है small modules are tested in isolation initially in isolation initially यानी अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल जो हैं उनकी कोडिंग की जाती है टेस्टिंग की जाती है फिर कोडिंग की जाती है फिर टेस्टिंग की जाती है इसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग ये इंपॉर्टेंट फेज आ गया इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग फोर्थ हमारा जो है फोर्थ फेज लिखिए this phase is highly crucial this phase is highly crucial this phase is highly crucial as the quality of the end product is determined as the quality of the end product is determined as the quality of the end product is determined at this phase the effectiveness of the testing carried out at this stage the effectiveness of the testing carried out the effectiveness of the testing carried out the better output will lead the satisfied customer the better output will lead to the satisfied customers satisfied customer with accurate results with accurate results and lowers the maintenance cost and lowers the maintenance costs नेक्स्ट फेज आ गई हमारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मतलब अब हमारा सिस्टम लाइव चल गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस लिखिए after the implementation of the software after the implementation of the software after the implementation of the software the maintenance is implemented
when when some upgradation some upgradation are needed are needed. Maintenance is the task. Maintenance is the task Maintenance is the task which is performed which is performed which is performed once the software has been delivered to the customer. Once the software has been delivered to the customer. Once the software has been delivered to the customer, installed installed कस्टमर के बाद कॉमा लगा के लिखिएगा installed and become operational. Installed and become operational. ठीक है, ये पांचों फेजेस हो गए। इसमें आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लिखाया है उसी को लिखा जाए। आप लोग अपने हिसाब से भी इसको चाहे तो नोट्स बना लिएगा। कुछ एडवांटेजेस हैं, उनकी भी लिस्ट लिख लिए। एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। देखिए वाटरफॉल मॉडल सबसे पहला एडवांटेज, वाटरफॉल मॉडल इज अ सिंपल मॉडल। Waterfall model is a simple model which can be easily understood. Waterfall model is a simple model which can be easily understood. Next लिखिए, it is one in which all the phases are done step by step. It is the one in which all the phases are done step by step. It is the one. It is the one in which all the phases are done step by step. Each phase of waterfall model are well defined. Is well defined, sorry. Each phase are well defined, which leads to which leads to which leads to no complexity, no complexity, which leads to no complexity and makes the project easily manageable and makes the project easily manageable.
लिखिए, the requirements are explicitly declared, यानी अलग से डिक्लेयर कर दिए जाते हैं. The requirements are explicitly declared and they remain unchanged explicitly, explicitly declared. The requirements are explicitly declared and they remain unchanged during the entire project. During the entire project. The start and end points of each phase. The start and end points of each phase. The start and end point of each phase is fixed. Is fixed. Which makes it easy to cover progress. Which makes it easy to cover progress. The start and end points of each phase is fixed, which makes it easy to cover progress. ठीक है, इतने एडवांटेजेस हो गए. आप लोग और इसमें एडवांटेजेस कहीं से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं सर्च करके. इसके डिसएडवांटेजेस कुछ लिख लिए. कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लिख लिए थोड़े से. देखिए, द रिस्क फैक्टर इन दिस मॉडल, द रिस्क फैक्टर इज हाई. In this model, the risk factor is high. So the model is not suitable for complex projects. So this model is not suitable for complex projects. In this model, risk factor is high. So this model is not suitable for complex projects. Next point लिख लिए. This model cannot accept the changes in the requirement during the development. This model cannot accept the changes. This model cannot accept the changes in requirement during the development. During the development. देखिए, it becomes tough to go back to the previous phase. It becomes tough to go back to the previous phase. It becomes tough to go back to the previous phase. लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, since the testing done at the last stage, since the testing is done at the last stage, since the testing is done